Hi everyone, good evening. Thank you for joining in for our webinar. Wish everyone on the call a very happy Diwali and a very happy New Year. Today we have a very interesting lineup for our webinar, and uh, we will be covering along with that a lot of things around that space. So a lot of people on the call would have heard about Elcid investments, and that was a stock which was listed on the exchange, available at 3.5 rupees. And आज के दिन पे उसका भाव exchange पे करीबन 3.5 लाख रुपए चल रहा है. It has now become India's most expensive share, beating MRF in value as well. So we will cover कि वो स्टॉक में क्या चल रहा है, how does that happen, and ऐसे और कौन से स्टॉक है जिसमें there might be room for such tremendous growth. Parallelly, post that we will also cover developments on NSE. NSE ने अभी अपना H1 का रिजल्ट्स दिया है, and how does that put NSE's valuation stock? That is something which we plan to cover at the second half of the webinar. Like always, for the next 40 minutes roughly, we will cover the portion which is a part of the presentation, and उसके बाद 10 से 15 मिनट का हम एक Q&A session रखते हैं, जहाँ पे anyone on the call who wants to ask a question can unmute the call and essentially ask a question. In the interim, if you have any questions, kindly post it on the chat. Chat पे आप अपने सवाल लिख दीजिए. So हमारी टीम भी इस कॉल पे प्रेजेंट है, एंड जो पॉसिबल होगा that they will answer on the chat itself. If it is not answered, I will take it up on the Parikshit ji is saying can't hear anything. Is that the case with others also? If someone else can confirm on the chat if I am audible. Okay. Parikshit ji, I think everyone else can hear. So ek bari aap, if you can just check your speaker, there might be some problem at your end possibly. Cool. So I think thank you everyone for confirming. Let's quickly dive into the presentation. So the topic of today which we are going to cover first is of Elcid investments. Now, Elcid is essentially a company which was listed on the exchanges for the last, I don't know, more than a decade, I think. And there were no trades which were happening in this company. और ये जो listed price इसका चल रहा था, ये करीबन 3.5-4 रुपए के आसपास चलता था. Recently, करीबन 5 दिन पहले, इसका प्राइस 3.5 रुपए से 3 लाख रुपए हो गया. So what has happened? Let's understand. आपने शायद न्यूज कवरेज भी देखा होगा कि 73,000 टाइम्स सर्ज हो गया एलसिड इन्वेस्टमेंट इन 2 days. 10,000 रुपीज के अगर स्टॉक किसी के पास थे तो 67 करोड़ रुपीज के बन गए. कॉस्टलीस्ट स्टॉक इन इंडिया वेंट फ्रॉम 3 rupees to 2,36,250 rupees. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या था और ये कैसे हुआ है. नाउ एलसिड, for others it is a new stock, but for people on Altius it has been available for the last 5, 6, 7 years, and we will understand in the next 5 minutes कि ये क्यों 3.5 रुपए पे था और आज के दिन ये क्यों 3.5 लाख रुपए पे है. ये जो 10,000 टाइम्स का जो सर्ज आया या 1 लाख टाइम्स का जो सर्ज आया, ये कैसे आया और क्यों आया. सो पहले समझते हैं कि एलसिड क्या है. सो एलसिड इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक एनबीएफसी है. इसमें एशियन पेंट्स के कुछ शेयर्स पड़े. तो इसमें जो एशियन पेंट्स की जो प्रमोटर ग्रुप है, जो चोक्सी ग्रुप है, उनकी बेसिकली ये कंपनी है. दे होल्ड द मेजॉरिटी स्टेक इन एलसिड, एंड इनके पास 3% स्टेक है एशियन पेंट्स में. इस कंपनी में 2 सब्सिडरीज हैं, एक मुराहर इन्वेस्टमेंट्स और एक सुप्तास्वर इन्वेस्टमेंट्स. इन दोनों में भी कुछ होल्डिंग है. इन तीनों होल्डिंग्स को जब आप सम करोगे तो एसेंशियली एलसिड के पास 3% स्टेक बनता है एशियन पेंट्स में. अब इस कंपनी में 2 बार डीलिस्टिंग के भी अटेम्प्ट्स हुए हैं. सो द प्रोमोटर ग्रुप हैज एक्चुअली गिवन अ बायबैक ऑफर टू द अदर शेयर होल्डर्स कि आप हमें अपने सारे शेयर्स टेंडर कर दीजिए. 2013 में ये पहला ऑफर आया था, जब सिर्फ 40% शेयर होल्डर ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट किया. एंड बिकॉज ये सेबी का 90% का टारगेट नहीं मीट कर पाए, तो इनकी डीलिस्टिंग की अटेम्प्ट फेल हो गई. 2022 में इन्होंने फिर डीलिस्ट करने का ट्राई किया था. इस बार इन्होंने 1,60,000 रुपए पे ट्राई किया था, बट अगेन
जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उनकी डीलिस्टिंग एक बार दोबारा फेल हो गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हुआ अभी लास्ट 15 दिन में, क्या हुआ कि ये वैल्यू अनलॉकिंग हो गई एंड ये प्राइस 3 रुपए का 3.5 लाख रुपए हो गया। सो बिफोर वी गेट इनटू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिनका काम सिर्फ दूसरे किसी शेयर्स को होल्ड करना है। उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता। दे हैव नो बिजनेस ऑफ देयर ओन, दे हैव नो ऑपरेशंस ऑफ देयर ओन, दे ओनली होल्ड शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, गेट डिविडेंड, एंड इन केस देयर इज अ सेल दे गेट द कैपिटल गेन्स अगेंस्ट दैट। इसके कारण क्या हुआ, देयर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज जहां पे देयर वाज अ गैप इन द लिस्टेड प्राइस एंड इन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स। तो हो सकता है वो कंपनी के स्टॉक आज के दिन लिस्टेड हैं एक्सचेंज पे और उनका लिस्टेड मार्केट में भाव चल रहा है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू आज के दिन हो गया 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। एंड इसीलिए क्योंकि हमारे मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है सर्किट का, तो टिपिकली एक स्टॉक एक दिन में 20% के ऊपर सर्किट के ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकता है। सो देयरफॉर 3.5 रुपए पे अगर आप सर्किट भी लगाओगे 20% का, तो 3.5 रुपए का 4 रुपए होता है। फिर भी 4 रुपए और 4 लाख रुपए में इतना गैप है कि कोई ट्रेड्स कर नहीं पा रहे थे। जब सेबी ने ये देखा तो सेबी ने लास्ट 6 मंथ्स में डिस्कशन करके व्हाइट पेपर निकाल के दे केम आउट विद अ सर्कुलर, जहां पे उन्होंने एक नया मैकेनिज्म निकाला विच वाज कॉल्ड अ स्पेशल कॉल ऑक्शन विद नो प्राइस बैंड। तो इन्होंने एक ऑक्शन सिस्टम बनाया कि कुछ देर के लिए इन स्टॉक्स में जो इनके क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं उनमें प्राइस बैंड के बिना ऑक्शन हो सकता है। यानी कि एक स्टॉक जो 3 रुपए का है वो 30 लाख का भी ट्रेड हो सकता है और 2 लाख का भी ट्रेड हो सकता है और 10 लाख का भी ट्रेड हो सकता है। एंड Elcid was one of the first companies which fulfilled this criteria, and उनका ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वेरी लेट अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर में स्टार्ट हुआ, जब इनके शेयर्स में फर्स्ट टाइम ये विदाउट प्राइस बैंड कॉल ऑक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ and there were trades which were executed on the exchange. Altis was also one of the companies, one of the few shareholders who were able to be part of that price discovery process. And जो ये open हुआ उसमें हमने भी participate किया and we also invested and divested our stake in that process. Now 3 रुपए का 3.5 लाख रुपए हो तो गया, बट ये 3.5 लाख रुपए क्यों हुआ? हमने जो आगे डिस्कस किया था ऑन द फर्स्ट स्लाइड दैट Elcid होल्ड्स अ 3% स्टेक इन एशियन पेंट्स, इसका आज के दिन क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू आज के दिन इन दी सिंपल मार्केट कैप टर्म्स, एशियन पेंट्स का आज का भाव लेके उनका कितना स्टेक है वो कैलकुलेट करने से करीबन 13,800 करोड़ रुपए का आता है। इन द करंट मार्केट कैप, यानी कि आज के दिन डिस्कवरी ऑफ वैल्यू होने के बाद भी Elcid is at a market cap of 6,600 करोड़, यानी कि जो बुक वैल्यू 6 लाख रुपए पर शेयर के आसपास होनी चाहिए, वो शेयर आज के दिन हमें 3,30,000 रुपए पर शेयर पे कहीं ना कहीं मिल रहा है। नाउ ये शेयर अनलिस्टेड मार्केट में पहले भी अवेलेबल थे। मैं आपको क्विकली दिखाता हूं कि पहले ये किस प्राइस पे अवेलेबल हुआ करते थे। जस्ट अलाउ मी टू शोकेस दैट। हाँ, so let's come to Elcid investments. So this is how Elcid's price graph has been. करीबन 2021 में 1,60,000 था, उसके बाद इसका ये बाईबैक का नोटिस आया, उस समय इसका प्राइस 1,22,000 था, फिर लगभग 2022 में 140, 150, 160 के आसपास था। अब जब इनकी प्राइस डिस्कवरी होने लग गई उसके बाद दिस प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप। May 24 में दिस वाज एट 1,72,000, जुलाई में इट वाज एट 1,93,000, अक्टूबर मिड में इट वाज अबाउट 2,40,000 एंड अभी इट इज एट ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीस ऑन द एक्सचेंज। आज के दिन इसका क्या प्राइस है दैट आई विल जस्ट शो यू। तो आज के दिन ऑन द एक्सचेंज अगर आप ये लेने जाओगे तो आपको Elcid दिखा रहा है, वन सेकेंड, यस, आज के दिन Elcid ट्रेड कर रहा है 3,30,000 रुपए का एंड एवरी डे इसमें सर्किट लग रहा है। सो अगर आप 5 दिन की हिस्ट्री देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ 2,73,000 पे, अगले दिन 287, उसके बाद 3,01,000, फिर 3,16,000, अभी 3,30,000। सो इट इज गोइंग अप बाय 5%। 5% का इसमें कैप है कि एक दिन में 5% से ऊपर सर्किट नहीं लग सकता है, देयरफॉर इट इज गोइंग अप एवरी डे बाय 5%।
नाउ टिपिकली कोई भी होल्डिंग कंपनी जो रहती है वो 40 to 50% डिस्काउंट टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड कर सकती है. इंट्रिंसिक वैल्यू जनरली का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी होल्डिंग है, उस होल्डिंग का क्या फेयर वैल्यू है, एंड उस फेयर वैल्यू से कितने डिस्काउंट में हम आज के दिन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने देखा एलसिड का रफली फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए पर शेयर के आसपास है. तो देयरफॉर आज के दिन मार्केट में ये 3,30,000 रुपए पर शेयर के आसपास अवेलेबल है. कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, so this is how the story of Elcid was. We had a lot of investors जो हमारे साथ काफी पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं. करीबन ये Elcid का और प्रीवियस अगर हम प्राइस देखें तो करीबन ये 70-80 हजार रुपए पे चल रहा था समवेयर इन 2020-2021. 70-80 हजार रुपए से धीरे धीरे बढ़ते 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 आज के दिन ये 3,30,000 रुपए पे आ गया है. नाउ दिस इज हाउ द फाइनेंशियल्स लुक लाइक. इनके फाइनेंशियल्स में ज्यादा कुछ देखने का होता नहीं है. इनके पास जो पूरी अर्निंग आती है ये फ्रॉम इट्स होल्डिंग्स के थ्रू ही आती है. इधर इट इज थ्रू डिविडेंड और इट इज थ्रू चेंज इन फेयर वैल्यू. जो इनके इन्वेस्टमेंट्स है उनका जो वैल्यू इंक्रीज हुआ दैट इज देयर रेवेन्यू. अब बिकॉज हमने एलसिड समझा, सो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर कंपनीज डू वी हैव विच आर होल्डिंग कंपनीज, एंड उसमें क्या वैल्यू क्रिएशन होती है या क्या वैल्यू क्रिएशन हो सकता है, या हमें इन होल्डिंग कंपनीज को किस तरह से देखना चाहिए. दैट इज व्हाट वी वांटेड टू बेस दिस वेबिनार ऑन. द आइडिया वाज कि हम जितनी होल्डिंग कंपनीज हमारे पास हैं उसमें से कुछ कंपनीज को कवर करें, उनमें वैल्यू कैसे डिस्कवर किया जाए ये आपको बताएं, और साथ में इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने के पहले क्या समझना चाहिए. दैट इज व्हाट वी वांटेड टू कवर हियर. So we will be covering 3-4 companies in the next 5-10 minutes quickly. The first of that is Bharat Nidhi. Now, Bharat Nidhi is essentially a group, a holding company of the Times Group. So Times Group, as you would know, it is one of the largest media companies in India. They have been there for the last 100 years. I think it's a pre-independence company. अर्लियर उनका मेन जो ऑपरेटिंग आर्म है उसका नाम है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, बीसीसीएल के नाम से वो जानी जाती है. और भारत निधि के पास बेनेट कोलमैन में 24% का स्टेक है. अब 2005 में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आई थी जिसमें बेनेट कोलमैन का पर शेयर का प्राइस करीबन 25,000 रुपए डिफाइन किया गया था. माइंड यू ये 2005 की वैल्यू है, हमें आज की क्या वैल्यू है ये नहीं पता, क्योंकि टाइम्स ग्रुप में ज्यादातर कंपनीज प्राइवेटली हेल्ड है. सो यू डोंट नो व्हाट इज देयर करंट फेयर मार्केट वैल्यू. एंड अगर इस प्राइस पे हम टोटल बीसीसीएल की कितनी होल्डिंग है भारत निधि में अगर वो चेक करें तो ये लगभग 17,500 करोड़ रुपए की आती है. इसके अलावा इनके पास एचडीएफसी बैंक और कुछ म्यूचुअल फंड मिला के 7,500 करोड़ की और होल्डिंग है जस्ट इन दीज एचडीएफसी एंड सम एमएफ्स. सो टोटल इन्वेस्टमेंट इन भारत निधि हेल्ड इज अराउंड 25,000 करोड़. इनके पास 30 लाख शेयर हैं, तो देयरफॉर अगर हम 25,000 करोड़ डिवाइडेड बाय रफली 30 लाख शेयर करते हैं तो हमें कहीं 87,000 रुपीज पर शेयर का वैल्यू आता है. भारत निधि आज के दिन अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है एट अबाउट 14,000 रुपीज अ शेयर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 80% डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू. इसमें अगेन द मेन आइटम टू नोट इज that this value of 25,000 which we have taken is from 2005. अभी 2005 के बाद ये वैल्यू 25,000 की 1,25,000 हो गई है कि 2,500 हो गई है, वी डोंट नो. ऑब्वियसली कंपनी ने अच्छा किया तो ऊपर ही गया होगा, बट कितना ऊपर गया है ये हमने इसमें फैक्टर इन किया ही नहीं है. मैं तो 2005 के वैल्यू पे क्या वर्किंग आ रही है ये हमारे साइड से हमने एक निकालने की कोशिश की थी. सो बेसिस दैट वैल्यूएशन वी सी दैट द intrinsic market value is much lower than the FMV. Similarly, Camac Commercial is also a similar company. It again holds shares of the same group, Times Group की holding company है. इसमें 38 लाख शेयर है करीबन बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के, जिसका वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है. आज के दिन कैमैक कमर्शियल के 9 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है. देयरफॉर अगर हम कैमैक कमर्शियल के पर शेयर प्राइस निकाले तो करीबन 2,20,000 रुपए का पर शेयर प्राइस कैमैक कमर्शियल का निकल के आता है. मार्केट में कैमैक कमर्शियल कुछ 44,000 के आसपास अवेलेबल है, विच इज अगेन 80-84% डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेयर मार्केट वैल्यू. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी. दिस इज अ कंपनी कॉल्ड आइनॉक्स लीजिंग, जो
आइनॉक्स ग्रुप, जो आइनॉक्स एनर्जी या आइनॉक्स विंड जो ग्रुप है, उसके कुछ कंपनी के इनके पास शेयर होल्डिंग है. So again, this is also holding company. This is also an unlisted holding company. We have been having these shares for a very long time. I think 7-8 साल से हम होल्ड करके रखे हैं. अब इसके अंदर समझते हैं कि क्या चीज, क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो इसमें ज्यादातर जो ये नोटवर्दी है, ये 4 इन्वेस्टमेंट्स हमें मिले थे. एक इनमें कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जिसका स्टेक वैल्यू 20,000 करोड़ का है. आइनॉक्स विंड एनर्जी 6,800 करोड़ का है. आइनॉक्स विंड है इसमें 340 करोड़ का, और कुछ और मिला के 560 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आते हैं. तो टोटल इस कंपनी में लगभग 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बैठता है. इस होल्डिंग कंपनी में 28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट छुपी है. नाउ इस कंपनी में कुछ काम जो हो रही थी, लगभग सितंबर तक 3,300 रुपए पर शेयर के आसपास हो रहा था. 6 नवंबर यानी आज का करंट प्राइस इसी सिमिलर शेयर का हो गया है 15 से 20,000 रुपए के बीच में. ये ट्रेड करना स्टार्ट हो गया है. अभी समझते हैं कि ये 3,000 से 20,000 रुपए की जर्नी 10 दिन 15-20 दिन में कैसे हुई. रिसेंटली आइनॉक्स का एक नोटिस आया कि GFCL, जो ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल थी, इसका मर्जर अनाउंस हो गया, जिसमें 1:6 के रेशियो में आइनॉक्स लीजिंग के शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाएंगे. एंड वो शेयर्स आइनॉक्स लीजिंग के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे. Therefore, because value unlocking started happening here, therefore the price suddenly shot up. And जो चीज कुछ दिन पहले तक 3,000 रुपए पे काम हो रहा था, वो अचानक से 15-20 हजार रुपए पे काम होने लग गया. So this is the story of Inox Leasing and Finance. सिमिलरली एक और कंपनी कवर करते हैं. एक कंपनी है फिनो पेमेंट्स बैंक, जो आज के दिन पे लिस्टेड है. स्टॉक मार्केट से आप ले सकते हो, NSE BSE दोनों पे इट इज लिस्टेड. इसकी एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है फिनो पेटेक लिमिटेड. इसमें करीबन 75% स्टेक उस बैंक की इसके अंदर हेल्ड है. और जितने पुराने इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ये बैंक को प्रमोट किया, उन्होंने जो अपनी होल्डिंग ली वो फिनो पेटेक में ली थी. एंड फिनो पेटेक ने फिर ये बैंक को प्रमोट करके, उसको बड़ा करके, उसको फिर लिस्टिंग करा दी थी. जब हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो हमने अगस्त में इसमें देखा था कि इसका करीबन 100-110 रुपए का भाव चल रहा था. एट दैट प्राइसिंग वी रियलाइज्ड कि इसमें जितनी वर्थ की फिनो पेमेंट्स बैंक थी, दैट वाज अबाउट 2,500 करोड़ रुपीस. एंड उस समय दिस कंपनी वाज अवेलेबल एट अराउंड 1,500 करोड़ ऑफ मार्केट कैप एज फिनो पेटेक. देयरफॉर हमने देखा कि 2,400 करोड़ का जिसमें इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी हमें अवेलेबल है 1,500-1,600 करोड़ में. देयरफॉर वैल्यू क्रिएशन का जगह बहुत ज्यादा है. एंड देयरफॉर वी काइंड ऑफ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू इट. एंड आई थिंक हमारे इन्वेस्टर पूल में काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा है. एंड 1 अगस्त के बाद द प्राइस काइंड ऑफ स्टार्टेड गोइंग अप. आज के दिन फिनोपेटेक इज समवेयर ट्रेडिंग अराउंड 165 to 175 रुपीज अ शेयर. लगभग मैंने 172 का एक एवरेज प्राइस यहाँ पे इसलिए डाला है. नाउ इसमें अब आप देखोगे कि द डिफरेंस इन द मार्केट कैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एंड द करंट मार्केट कैप इज नॉट टू हाई. एंड इसका ये रीजन है कि एलसिड में या आइनॉक्स में या कमैक कमर्शियल में देयर इज नो क्लियर पाथ टू अ वैल्यू अनलॉकिंग, कि किस तरह कब प्रोमोटर आपको एलसिड देगा. बट टिपिकली पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में द वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस इज वेरी क्लियर. तो इनका वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होता है, ये या तो बैंक रिवर्स मर्ज कर जाती है अपने सब्सिडरी में, और इन्वेस्टर्स को जो लिस्टेड एंटिटी है उसके शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं. ये होने से आपको वैल्यू अनलॉकिंग का रास्ता जल्दी खुल जाता है. देयरफॉर इन कंपनीज में डिस्काउंट कम चलता है. बट फिर भी देयर शुड बी अ फेयर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बिकॉज वी आर नॉट सिटिंग हियर टू मेक 5-10-15%. वी आर लुकिंग एट अ लार्जर गेम. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी विच एग्जिस्ट्स इन द मार्केट. नाउ हमने काफी कुछ समझा. व्हाट इज एलसिड, व्हाट इज कमैक कमर्शियल, व्हाट इज भारत निधि, व्हाट इज फिनोपेटेक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि होल्डिंग कंपनीज को कैसे देखा जाए, या होल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान किया जाए. सो पहला पॉइंट है कि वैल्यू अनलॉकिंग इन अ होल्डिंग कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन ट्रिगर्स, राइट. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ले रखे हो, 2-5-10 साल तक कुछ हो ही नहीं, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नथिंग, नो न्यूज कमिंग आउट, क्योंकि
ये डिफाइंड ही ऐसे है कि इनको होल्ड करने हैं शेयर्स को, तो इनका नेचर ही ऐसा है कि इनमें सालों तक कुछ होता नहीं है, फिर वन फाइन डे देयर इज अ ट्रिगर एंड वो आपका जो शेयर कल एक्स रुपीस का था वो आज अचानक से 5x 10x 15x 20x कुछ भी हो सकता है. Therefore, anyone who buys a holding company should be ready for a very long holding period. इसको आपको कभी भी एक शॉर्ट टर्म 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए. Second thing which we typically advise is track the discount from the intrinsic value which you are getting today. तो जैसे कि आज के दिन हमने देखा कि एलसिड पर शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे हिसाब से 6 लाख रुपए होना चाहिए, आज के दिन आपको 3.25 लाख रुपए में मिल रहा है, तो लगभग डिस्काउंट 50% का बैठता है. तो 50% का डिस्काउंट फेयर है या नहीं है ये आपको जज करना चाहिए व्हाइल यू आर इवैल्यूएटिंग होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इनकी खुद की तो कोई बिजनेस है नहीं. तो अगर बिजनेस है नहीं देन देयर इज नो पॉइंट गोइंग डीपर. सो यू ऑल यू हैव टू डू इज सी कि आज के दिन में कितना होल्डिंग है, होल्डिंग की क्या वैल्यू है, होल्डिंग से कितने डिस्काउंट पे आपको ये चीज आज के दिन अवेलेबल हो रही है. सिमिलरली जैसे हमने कमर्शियल या भारत निधि में देखा कि चलो इनकी वैल्यू इतनी है, इतने डिस्काउंट पे हमें ये शेयर्स मिल रहे हैं. So that's what we kind of understand or evaluate holding companies with. Third point which is very important is you have to be very guarded. क्योंकि मैनेजमेंट इसमें क्या करता है, बिकॉज ज्यादातर स्टेक मैनेजमेंट के पास होता है या प्रमोटर के पास होता है, दे ट्राई टू साइडलाइन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स विद बायबैक ऑफर्स. सो वो क्या करते हैं, जैसे हमने एलसिड के केस में देखा, उन्होंने बायबैक ऑफर निकाल दिया और वो वैल्यू ऑफ ऑफर मे नॉट बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, बट अब उन्होंने वैल्यू निकाल दिया है एंड अगर 90% शेयर होल्डर ने ले लिया तो आपका भी स्टॉक ऑटोमेटिकली बायबैक में टेंडर हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी रियल रिस्क, ये एक रियल रिस्क फैक्टर है जो इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान में रख के ही होल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज फॉर अ कंपनी जहां पे 90% या 95% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, सिर्फ 5 या 10% मार्केट में है, वहां पे देर इज हाईली लाइकली कि प्रमोटर चाहेगा कि सारी जो 5-10% होल्डिंग है वो भी मेरे पास वापस आ जाए. सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट वी आर इंश्योरिंग दैट द मैनेजमेंट इज अ साउंड वन. इट डज नॉट इंटेंड टू काइंड ऑफ टेक योर शेयर्स ऑन अ वेरी लो प्राइस. अगर बाय चांस वो चेष्टा करते भी हैं, देन देयर आर ऑब्वियसली वेज एंड मीन्स दैट यू कैन टेक इट अप विद द कोर्ट्स, और ऐसा बहुत सारे होल्डिंग कंपनीज में हुआ है. एज ऑल्टियस ऑल्सो हमने कई लीगल बैटल्स फाइट किए हैं जहां पे हमने कई केसेस में को असिस्ट किया है, जहां पे मैनेजमेंट ने बहुत लो बॉल ऑफर दिया एंड देन वी वेंट टू एनसीएलटी एंड वी हायर्ड आवर ओन लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड वी सेड दैट दिस ऑफर इज नॉट फेयर एंड द कंपनी नीड्स टू रिवाइज द ऑफर एंड कम. एंड we have sometimes we've been successful, sometimes we've not been successful. So this is a risk factor which all investors should understand. But all being said, this is how the holding company game plays out. आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है, उसके अंदर कितना स्टेक है, वो स्टेक से कितने डिस्काउंट में आज के दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वैल्यू अनलॉकिंग के क्या जरिए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये शेयर्स की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या चांसेस है कि कंपनी डिविडेंड दे देगी, क्या चांसेस है कि देयर कैन बी अ रिवर्स मर्जर और आपको जो सब्सिडियरी है उसके शेयर्स मिल जाएंगे. एंड इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके समझ के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए वेदर टू इन्वेस्ट इनटू सच कंपनीज और नॉट. Perfect. Thank you. This was the first part of our presentation, which we want to cover basically on holding companies. And we decided to do it now because Elcid पे काफी न्यूज आया था एंड बहुत लोगों ने हमें भी रीच आउट किया था कि Elcid में क्या हो रहा है. वी वांट टू अंडरस्टैंड लिटिल बेटर, सो वी थॉट कि हम एक प्रेजेंटेशन के रूप में, एक वेबिनार के रूप में इसको आपको प्रेजेंट करेंगे. Now let's try and cover what NSE is. Now NSE, everyone knows, it is India's largest exchange. It is globally the world's 7th largest exchange by the companies listed on it. It is the number 1 multi-asset exchange, number 1 derivative exchange, number 3 equity exchange. And you know, all of these are the products of NSE. I think this is something that everyone knows. We have done a very detailed presentation on NSE earlier. अगर आपको NSE क्या है, क्या lines of business है, क्या sources of revenue है, वो समझना है, तो दैट प्रेजेंटेशन इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट इन दिस वी विल टिपिकली कवर कि अभी एनएसई में क्या चल रहा है.
The key change which has happened in NSE is there have been new regulations from the SEBI, which is the market regulator, on FNO trading. Now FNO, which is future and option trading, एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर NSE. अब इसमें दो मेजर चेंज आए हैं. पहला मेजर चेंज आया है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ FNO जो पहले 5 से 10 लाख रुपए में था, वो अब बढ़ा के 15 से 20 लाख रुपए कर दिया गया है. सो लगभग 2 से 2.5 गुना का इंक्रीज है कॉन्ट्रैक्ट साइज में. सेकेंड मेजर चेंज आया है कि इंडेक्स के जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें एक ही इंडेक्स में आप एज एन एक्सचेंज वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन दे सकते हो. पहले क्या था, आपने अगर एज एन एक्सचेंज अगर 10 इंडेक्स फ्लोट कर रखे हैं तो आप 10 इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी दे सकते हो. तो बैंक निफ्टी में भी दे दिया, निफ्टी 50 में भी दे दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी दे दिया, निफ्टी फिन 50 में भी दे दिया. बट अब आ गया है कि आप सिर्फ एक सिलेक्ट करोगे एंड सिर्फ उसमें आप वीकली एक्सपायरी दोगे. सो दिस is basically a regulation from SEBI's end to reduce the trading which is happening in the stock market or the speculative bits which is put in the last 3, 4, 5 years. इससे there is a reasonable expectation कि there might be a drop in the derivative values volume, majorly in index options. So this is only applicable on index options. Stock option ट्रेड्स एज इट इज, उसमें कोई भी कर्व नहीं आया है. सिर्फ इंडेक्स के जो ऑप्शंस है वहां पे देयर हैज बीन अ कर्व व्हिच हैज बीन पुट इन. दिस कैन इम्पैक्ट द NSE's रेवेन्यू एंड प्रॉफिट गोइंग फॉरवर्ड, एंड इट विल आल्सो इम्पैक्ट ऑल ब्रोकर रेवेन्यूज, द एंटायर चेन. जो आज के दिन पूरी स्टॉक मार्केट की चेन है, उसमें देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अपडेट. Next, what is the update on NSE? NSE has about 24% stake in Nsdl. Nsdl ने अभी recently IPO file किया है, and because of filing that IPO, the expectation is that the holding in Nsdl for NSE will go down from 25 to around 25 to 15%. And therefore, in the next 1 year, we are also expecting a large one-time gain to hit the NSE's books. Some positive news. Cash market, on the other hand, has gone up significantly. From the last year to this year, there has been a 66% increase in the cash market segment. And this is good because अगर FNO revenue कम हो रहा है, तो cash market में वो अगर momentum shift हो रहा है, तो that basically shows us that investor interest is still there. It is just getting shifted from maybe buying an exchange contract or a index contract to actually investing directly in those cash market segments. And this has gone up by a very significant number of 66%, reaching almost 1,30,000 crores in the current year. Lastly, quickly covering NSE's IPO. NSE का IPO has been approved by the NSE board. So NSE board has said कि we are now planning to go ahead with the NSE IPO, but they have not yet filed for the DRHP. Now they are waiting an approval from SEBI to approve their IPO. जब उनको वो approval मिल जाएगा, then they will essentially file the DRHP. DRHP file होने के बाद SEBI will review the DRHP, approve it. Approve होने के बाद there'll be road shows and anchor investor fixing, and उसके बाद final IPO will come. The expectation on timelines, personally, I don't see it coming before 12 months, but 12 से 18 से 24 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, considering everything has now broadly been settled. Quickly covering what are the other developments. This is how the market share looks like. Cash segment में NSE has a 93% market share. Equity में at least recently it had a 100% market share, but now this is supposed to change. Why will both equity option and future will change is because of the reduction in the weekly expiry contracts. क्योंकि हर इंडेक्स, हर एक्सचेंज एक ही इंडेक्स पे वीकली एक्सपायरी कर सकता है, तो कुछ वॉल्यूम जो NSE पे पहले हुआ करता था, नाउ दैट विल शिफ्ट टू BSE, बिकॉज लोगों के पास पोजीशन लेने के लिए ऑप्शंस अभी कम हो गए. डेट सेगमेंट में करीबन 95% है एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेगमेंट में 100% है. वन क्रिटिकल डेवलपमेंट विच हैपेंड इज करेंसी ऑप्शंस बोल के जो सेगमेंट था, उसमें देयर हैज बीन ऑलमोस्ट 96% ड्रॉप, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू द न्यू सेबी रेगुलेशंस, ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर आपके पास एक वैलिड बैकअप इनवॉइस है,
वहीं पे आप करेंसी ऑप्शंस में पोजीशन ले सकते हो। तो स्पेक्युलेटर जो ऑप्शन ले सकता था वो अभी यहाँ पे क्लोज हो गया है। नाउ यू कैन नॉट टेक अ स्पेक्युलेटिव पोजीशन इन द करेंसी मार्केट, जिसके कारण 90-95% का ड्रॉप आ गया है। इट वाज नॉट अ वेरी बिग नंबर अर्ली ऑन ऑल्सो, बट whatever the number was, it has kind of dropped. Quickly covering the financials. Last year FY24 में NSE did about 16,000 crores का टॉप लाइन, जिसमें उनके पास 8,000 करोड़ का बॉटम लाइन था। EPS लगभग 167 रुपीज था, जिसमें से 90 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दे दिया था। तो करीबन 55% का डिविडेंड पे आउट यील्ड था NSE का। नाउ क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड कि NSE वर्सेस BSE कैसा दिखता है। दिस इज considering prices as on November 24. So again we have taken FY24 data here. तो लास्ट ईयर FY24 डेटा के ऊपर ये कैलकुलेशंस की गई हैं। NSE का रेवेन्यू है 16,000 करोड़ का, BSE है 1,600 करोड़, NSE का पैट है 8,300 करोड़, BSE इज एट 772 करोड़, जिसमें से 407 करोड़ का एक वन टाइम गेन था which was from stake sale of CDSL. Therefore regular PAT जो था for BSE that was around 300 crores. Current market cap for NSE is around 4,80,000 crores. For BSE, it's around 65,000 crores. On FY24, the PE multiple for NSE will come at around 58, and for BSE will come around 85. And this is again on a base of 700 crores of profit. Ideally, अगर ये 300 करोड़ पे लिया जाए तो ये 168, 169 का फिगर आना चाहिए on operational metrics. Price to book is similar, price to sale is 30 and 40. So what is more critical for exchanges is that we evaluate the exact price to earnings for BSE. What we have to, however, acknowledge is BSE, आपने सबने notice किया होगा that on the exchange BSE has done phenomenally well because operational metrics जो real धंधा है BSE में, that has really improved in the last 1 year, both in terms of cash segment and in terms of option segment. So last year Q1 24 में BSE ने करीबन 33 करोड़ का पैट दिया था, अकाउंटिंग फॉर दी वन टाइम गेन। इस साल इन्होंने उस 33 करोड़ के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 264 करोड़ का पैट दिया है, विच काइंड ऑफ एडवाइजेस अस की हो सकता है इस साल में BSE इज एक्चुअली एबल टू रिपोर्ट अ 1,000 करोड़ पैट अगेन, जिसमें कोई वन टाइम गेन नहीं रहेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर एंड आई थिंक BSE has actually been able to claw its way back into the Indian stock market scenario. जहाँ पे एक बार के लिए BSE पूरा sideline हो गया था, it has been able to again find its footing in mutual funds, in cash market, and slowly also it is getting market share in the option segment. Now let's quickly look at H1 FY25 results. ये अभी recently publish हुए थे, करीबन 4 दिन पहले इनका रिजल्ट लॉन्च हुआ था। So revenue stands at around 10,000 crores. H1 का रेवेन्यू इनका 7,000 करोड़ का था, तो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 35%। पैट में इन्होंने 5,700 करोड़ का पैट दिया है। लास्ट ईयर H1 एज इन पहला 6 महीने में इन्होंने 3,800 करोड़ का पैट दिया था, तो पैट हैज एक्चुअली गॉन अप बाय 48%। बट पैट में व्हाट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज NSE का एक बड़ा खर्चा होता है जो ये सेटलमेंट गारंटी फंड में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। Last year that number was high, this year that number is lower. So the PAT is also because of rationalization in settlement guarantee fund payouts. But leaving aside technicalities, this is how the number looks like: 35% growth in revenue and around 48% growth in PAT. अगर ये run rate continue होता है तो we are expecting NSE to report around 20,000 crores of top line and around 10,000 crore of bottom line in FY25, which is around a 20% increase from their FY24 number. BSE likewise we expect, अगर अभी जो रन रेट चल रहा है वो कंटिन्यू होता है एंड उसी रेट पर अगर BSE काम कर पाती है तो 2,600 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए और उस पे 1,000 करोड़ का पैट आना चाहिए। अगर ये हमने जो एस्टिमेशन लिया है, अगर ये H1 के एस्टिमेशन पे सही बैठता है तो आज के दिन NSE का PE बैठता है 48 और BSE का PE बैठता है 65। Now this is just quickly covering Nsdl. So NSE जैसे BSE में हमने बताया कि एक वन टाइम गेन आया था इन FY24 ऑफ 407 करोड़। Nsdl में भी जब IPO आएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1,200 से 1,300 करोड़ का एक वन टाइम गेन आएगा NSE में,
which will be from the sale of the stake in the Nsdl IPO. Now, because we are covering that, we want to also cover Nsdl. Nsdl भी हमारे कई investors ने invest कर रखा है. So just covering Nsdl has in terms of number of demats, Nsdl has about 3.58 crores. CDSL has about 11.56 crores. 99% of FPIs is with NSDL. NSDL में number of accounts काफी कम है, लेकिन value of accounts is significantly high. It has one of the largest holdings. So value wise, the majority holding is still with NSDL, but value wise, because CDSL was able to crack the new age brokers better, therefore all of the new accounts are getting opened in CDSL. Custody value for NSDL is almost at $5 trillion. This is how the incomes look like. करीबन 1300 करोड़ का टॉप लाइन है, 1400 करोड़ रुपए कमाए हैं इन्होंने 23-24 में, जिसमें 275 करोड़ का इन्होंने पैट दिया है. गेन ओवर लास्ट ईयर रेवेन्यू पूल में 30% का गेन है और पैट पूल में 11% का गेन है. दो सब्सिडरीज हैं, एक एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट और एक एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक. Both do not contribute anything meaningful to the bottom line, so not covering it in depth. Now let's quickly compare NSDL versus CDSL. NSDL, and these are again FY24 numbers. NSDL is at 1366, CDSL is at 907 करोड़. पैट अगर देखें तो 275 करोड़ का पैट था NSDL का और CDSL ने 420 करोड़ का पैट दिया था FY24 में, which puts its margins at much better than NSDL. At the current market cap, NSDL is at 20,000 crores and CDSL is at 30,000 crores. P multiple अगर देखें on FY24 numbers, तो NSDL का 77 का P आता है, 77 का P आता है, whereas CDSL is at 80 का P. And I think this is pricing considered as 1,050 and CDSL is considered at 1,600. So I think that is what we wanted to cover as a part of our entire presentation on NSE and Elcid. This is something which some people also asked us to cover again. This was the Diwali basket, which we had made to create a portfolio for new investors, in which we had three companies: Vivriti Capital, Indofil, and Spray Engineering Devices. Vivriti, as we had covered earlier, it's an NBFC which is backed by Lightrock Creation. Indofil is a specialty chemicals business. Again, this also has a unique story. इसमें Godfrey Phillips के shares हैं जो Indofil के current market cap से भी ज़्यादा के हैं. And therefore we feel कि Indofil is also a company जहाँ पे similar value unlocking is possible in the future. Spray Engineering Devices is a new company which we had identified some months back. It is into an interesting business wherein it is creating machinery for efficient heat exchanging and recycling. They have grown very quickly. Last year they almost gave a revenue pool of 550 crore and a profit pool of 55 crore. इनका DRHP मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने में आ जाना चाहिए. IPO इनका 12 से 18 महीने में प्लान्ड है. This is a quick overview on our Pro Plan. We were running some discounts here. So Pro Plan is essentially wherein we give some early access to the new opportunities which we have. We give one-on-one access to our research team to the clients. And we also give some discounted pricing to clients who are willing to invest with us. That's what we wanted to cover. We are good on time. We were planning to finish our set by 3:45, so we've been able to do that. Let's quickly open the floor for the next 15 minutes. We will end the presentation sharp at 4 p.m. So, happy to take the questions for the next 15 minutes. I will just look at the queue and I will, in chronology, just ask people to kind of unmute and pose their question. So, Abhishek ji, if you could mute and go ahead. Hello. Ji, yeah. Yeah. Hi, Abhishek ji. How are you? I'm good, sir. Please continue. I just wanted to check on Indofil's listing in the future. What are the probabilities of the listing for Indofil? No plans as of yet, sir. जैसे कि मैंने बताया, Indofil में there is
a family feud which is going out between the mother and the son, Beena Modi, and I think Stan Modi is his name. Siddhant or Siddharth, one of the two. So therefore, there is no clarity on the IPO timelines yet. Sure. Thanks. Thank you. Mr. Malik, if you would want to quickly go ahead. Okay, no problem. I'll move on to the next. Mr. Santosh. Santoshi, are you not able to unmute? Is that the problem? Hello. Yeah, please go ahead, sir. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Please go ahead. I'm Sridharan from Chennai. I want to know what is the intrinsic value of Altius investments because I bought some shares recently. Right. Sir, Altius we can cover separately because that's not relevant for a lot of people on the call. You can kindly reach out to me over call and then we can, have a discussion on that for sure. Mr. Bhavin Dharamshi, if you would want to go ahead. Thank you. Thank you for the opportunity. What do you feel of Incred Holdings? Does it has the similar, what do you think about the holding companies like that? Only you are thinking about Incred Holdings and that spray engineering devices also I'm holding the same. So what do you see as a future? Not price perspective, but as a future. Cool. Thank you. So Incred, I think, is a company wherein I don't think there'll be too much holding company discount per se because again, like I said in Kino, the entire investing community has already invested in the holding company only. And the entire stake of the operating company, the Incred Finance, is held in Incred Holding. Therefore, whenever the listing happens, they will find a way to kind of do the value unlocking and give an exit to the investors in the holdco as well. Coming to business, they have reported Q1, Q2 numbers which are very sound. So they have almost, I think, reported 300 crore rupees ka PAT for the first half of the year. And I hear that the full year PAT will be around 500 crores. लगभग प्राइस टू बुक करीबन 3.5 का आ रहा है अभी जो प्राइस है while 3 months ago it would have been a good price to enter, but abhi because listed market maybe NBFCs are not performing that well, therefore I am a little concerned. But other than that, I think business overall Incred is doing well, but NBFC sector में stress है, therefore I'll be careful. On your second point on sprays business is very unique, so it works in a very niche area जहाँ पे उनके पास patents भी हैं for what they do, and therefore I don't think that there is any other company doing very similar line of business to what they are doing. But essentially, I think for spray, if they are able to tap into the ethanol piece well, if they are able to scale that piece, this can become something good. Management, I have had a couple of interactions, looks good. They have been doing this for a very long time. They have a good set of clients. They are doing both domestic and exports. They have a good order book also. So broadly, I think on spray, I am liking the company. Thanks a lot. And just the last question. Yeah. Polymer Tech had some auditor issue. What do you feel about it? Should we hold or should we exit? See, that's also a question for me as well. See, because there was the auditor was just appointed, I think, a year back. Now they have suddenly resigned, so that is a red flag. But I have not been able to kind of come to a conclusion whether how big of a problem it is essentially. So I mean, if you would not want to kind of risk it all, then probably exit. But other than that, I think reports and numbers are fine. But yeah, corporate governance issue, if it is there, then that is a non-negotiable item for me as well. Thanks a lot. Thank you very much. Shyamji, if you would want to quickly unmute.
Abhishek ji, can you hear me clearly? And thanks for Yes. the quickly. I think 2-3 questions. They're all related. Actually, what's the kind of timeline of listing of NSE? You covered. I mean to say, NOC, DRHP, and IPO. And what is the kind of valuation? Because this November 20th, we will know what's the kind of drop in the volumes, blah blah. So what's the kind of valuation you expect it to come at IPO? And hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. At what valuation you expect to come for the IPO, and at what valuation to list, and also what are the risks you're seeing to the to NSE before listing? So if you can just take us through I got your question, sir. I'll try to quickly cover that. So I think listing timeline, in my opinion, 12 to 18 months should be good. Risks to the IPO, I think the largest risk is if derivative curbing, which SEBI is apparently doing, how firm they are on that, how many companies. There is some noise coming. Can everybody mute, please? Yeah. So, Abhishek, Shine, could sorry. you just mute everyone apart from the one who's speaking? Thank you. So yeah, what I was saying is that 12 to 18 months is the timeline. Risk is largely regulatory risk. Say SEBI comes up with more regulations which kind of limits the contracts on a particular exchange, and that is a significant risk to the revenue profile of the company. Apart from that, I believe Indian markets will keep on growing fairly steadily for the next 5, 7, 10 years. And therefore, as a long-term story, I don't find any risk there. Listing price, I cannot be sure because price band can be decided by the bankers at the time of the IPO. But broadly, multiple wise, I think during listing between 35 to 40 should be a decent multiple. We'll have to see how the next year financials pan out to get to the final listing figure. Perfect. Thank you, Shyamji. Next, if Mr. Vamsi, if you could kindly go ahead. Hi, Abhishek. Yeah. Abhishek, I have two questions. Okay, one is the Taparia tools, what you mentioned that Elcid investments earlier. Okay, the same way the pattern is going on for NSE and BSC, correct? Taparia tools. So I think Taparia is slightly different. Taparia, although there is no value discovery, but Taparia is actually an operational company. It's not really a holding company. It has business, it has manufacturing setup, it has sales. But yes, that thing is similar. That the pricing on the exchange is much lower than the FMV. Therefore, there are no trades happening on the exchange. Okay, I mean, will we buy the price band, because I have seen the price band is very closer to the 4,800 rupees. Is it worthwhile to buy that share, or generally just curiosity? I was asking the question. Okay, is it Sure. worthwhile that investment of the So share? I think so typically for Taparia, you could look at the financials once. From what I recall, it is at about a 7,000 crore MCAP. And for 24, they had a PAT of about 100 crores. So 70 guna pe trade ho raha hai. It's at a 70x P multiple. That's steep. So at that valuation, you might be a little cautious in entering. बाकी बिजनेस तो अच्छा ही है. आई थिंक देयर इन अ नीश बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, टूलिंग स्पेस में ज्यादा कंपटीशन है भी नहीं. But all being said, valuation is something which we have to be always mindful of, and if that is at 70x, then we need to be careful for sure. Okay, thank you. Suraj, if you would want to quickly go ahead. Suraj. Okay, next, Mr. Ranjit, if you could kindly go ahead. Okay, Mr. Sailesh Burkul, if you could go ahead.
हेलो हाँ सर Yeah, सर आरआरपी yeah, sir. S4E इनोवेशन जो स्टॉक है ना उसके बारे में और अभी सचिन तेंदुलकर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ऐसा न्यूज है तो इसी में किया क्या इसका सेमीकंडक्टर एक और कंपनी है Correct. So, Sachin Tendulkar ने electronics में invest किया, sir, which is now listed also. So they had ओके done a reverse merger with a listed company called GD Trading, and GD Trading पहले से defunct company थी, तो उन्होंने reverse merge करके GD Trading का नाम change करके अभी RRP Electronics कर दिया है. RRP S4E is into defense manufacturing. They claim to have tie-ups with some companies in Israel, majorly into optics devices, जो गन्स के ऊपर जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगता है टिपिकली वो बनाते हैं. साथ में उनके पास और कुछ कुछ उन्होंने पेटेंट्स भी लिए हैं, कुछ ड्रोन कंपनी के साथ भी टाई अप किए हैं. सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क. FY24 मेरे हिसाब से इट वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. सो we'll have to wait and watch how the next couple of years play out. Hello, I got one more question. Is there? Can you hear me, please? Yeah. Yeah. See, the Swiggy IPO has come out with a bang now with a lot of hype there. What do you think in the next 5 years? How it will perform? Because the grey market prices come down almost. When they talked about listing gain will be 120 rupees, now almost come down to almost issue price only. What do you think the structure business model will be there next 4 to 5 years? Sir, I think that is a call which will have to be seen on the basis of how quick commerce overall does. Currently, if you look, quick commerce is looking like it is going to keep on exploding for the next 3, 4, 5 years, and Instamart will even become bigger than the food delivery business for Swiggy. If that actually pans out, and if Swiggy is able to kind of double its, triple its revenue in the next 3, 4 years, then obviously the market will completely change. The habits of people who are ordering online will change. E-commerce will shift to quick commerce, and quick commerce might get very, very large. Compared to Zomato, Swiggy is still available at a very reasonable market cap. So Zomato is almost at 4 lakh crore. Swiggy is at about, I think, 85-90,000 crores. Top line is broadly similar, but bottom line, Zomato is at about plus 230 crores, and Swiggy did a loss of about 1250 crores last year. So if they are able to get profitable plus maintain the growth rate over the next 1 to 2 to 3 years, it should do well. And a lot will also depend on how quick commerce plays out, in my opinion. Right. I agree with you. Yeah. Thank you very much. Thank you. I'll also just try and quickly take 1 or 2 questions from the International. chat. GK and Driveline. GK and Driveline, again, that's a company which is doing decently well. It is basically subsidiary of a foreign company. It gives you good dividends in terms of numbers. I think it does about 1,000 crores of top line and 100 crores of bottom line, approximately at around 2,000 crores of market cap. So around 25, 28 times earnings. So not very expensive. Dividend yield is of 4-5%. So looks good. Only challenge with GKN is I don't see value unlocking happening because the parent company is not looking to kind of liquidate its holding. So I don't know if IPO will come, and even if it does come, how will it kind of move ahead from there? Okay. What is your view on HDFC Securities? Sir, just allow me to follow the queue so that I can kind of give everyone a chance. But I'll just answer this. So I think Rajesh had asked. HDFC Securities, sir, it's a company in terms of valuation, it looks okay. From what I recall, approximately it is at a multiple of 20x earnings and around 6x, 7x sales. It gives you a dividend yield of almost 5% a year. IPO may be at least 2 years away because HDFC will first IPO the NBFC arm, which is HDB, and only after that they will plan for HDFC. So do you see any value potential, if to buy at the current rate, or we should look for another stocks there are? So I think you can possibly compare with other listed players. So I think if you compare with Angel One करीबन 20-22 के PEP मिलता है. So it is not very discounted also, it is not expensive also, it is not cheap also. And Angel One has still grown faster than HDFC in the retail segment. उन्होंने जो अपना app that they have
cracked much better than HDFC. But HDFC ने भी अभी Sky बोल के एक नया discount broking app निकाला है. So if that takes up, they can also rack up more retail clients. But apart from that, if you look at a listed peer, it is broadly similar in terms of valuation. Dividend yield for HDFC is a little better, and HDFC Sky will be the game changer if they are able to scale it out. Thank you. Cool. So I think it's about 4:02. So I got one more question. Is there? Can you please, see? It's a listed company, Sundaram Finance Holdings, which is offshoot of Sundaram Finance. It is basically a holding company. What do you see in the next 4 or 5 years? It can unlock more value in that? I have no. You have already asked 3 questions, sir. I have. Give others a chance. I have no understanding on that question also. Sorry. See, if it's Sundaram Finance Holdings is nothing but offshoot of Sundaram Finance Limited. Because I got whatever shares you are in Sundaram Finance, I got one share of Sundaram Finance Holdings. Mr. Sridharan, we will take that separately because, like I said, we wanted to close it out by 4 p.m. We'll try and extend the call for another 5 minutes to give the other people a chance because there are a lot of people who are kind of waiting for their questions. So as a next, so what we'll do is we'll take another 7 minutes because I think we went a little short on the Q&A this time. So Mr. Vishal Bharti, if you want to quickly go ahead. So Lava International, your views? Lava's company is doing good. Chairman was in jail, so that is where the corporate governance issue comes. The valuation is not very expensive, but again, I'm not too excited. Management to clean होना चाहिए, वो तो I think primary है before investing. So that is there. Thank you. Hello. Hello, sir. Hello. Yeah. Sir, when can we expect NSE bonus share reflect in our demat account? अगर इसका रिकॉर्ड डेट निकल गया है 2 तारीख का रिकॉर्ड डेट था तो मेरे हिसाब से विद इन द नेक्स्ट 40-45 डेज तो पक्का ही आ जाएगा. Okay, thank you, sir. Hello. Yeah, Mr. Vishal Changani, if you want to go ahead. हाँ सर, हेलो. Yeah. सर एपीआई होल्डिंग पे आपका व्यू क्या है? सर एपीआई अभी हमने रिसेंटली कवरेज किया है, मैं आपको उसकी डेक भिजवा दूंगा सेपरेटली, बट ब्रॉडली company has to, there are, I think in this space they have lost some market share to Tata 1mg and others. So, and they have not been able to go towards profitability. But I think current valuation is also not very expensive. इन्होंने 5-6 रुपए पे राइट्स दिया था जहाँ पे इन्होंने almost 90% डाउन मार्क कर दिया था कंपनी को. तो अगर they are able to bring in volumes, then they should be able to do well. Downside here I think is limited, but holding period कितना रहेगा for returns to kind of kick in वो थोड़ा सा we'll have to understand. But I'm happy to share that write up which we have prepared that should help you with more understanding of this. Hello. Mr. Sailesh, if you could go ahead. What about Indian Potash? Sir, I'll just take it line by line, otherwise it will be a little chaotic. Mr. Sailesh Sangvi. No problem. Mr. Nitin Jaiswal. Hi Abhishek ji, I have 2 questions which I have already typed in the chat, thinking that you will be taking questions from there. So I'll be repeating. So okay, sure. I had one question. I had seen one circular by NSE in which they had written about the companies which may be qualified for the auction, similar to Elcid. Right. And among those companies, TVS Holding was the one who had major difference in the book value. So do you have any idea about that? It is a listed company, TVS Holding. So you wanted to know कि इसका auction कब हो रहा है? हाँ, क्या अगर ऑप्शन होगा तो would it be roughly 50% का डिफरेंस अभी है जब उन्होंने सर्कुलर निकाला था 31st March 2024 का, then it was 1/3 value. Okay. तो सर would it be, मेरा क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन से मुझे जो समझ में आया कि इट इज ऑलमोस्ट फेयर कि अगर 50% वैल्यू पे है वो कंपनी ऑलरेडी तो अपसाइड शायद लिमिटेड हो.
हाँ सर, मेरा बेंचमार्क जो है, मैं आपको अपना बेंचमार्क बता सकता हूँ. माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर कंपनी होल्डिंग कंपनी ही है और एग्जिट का कोई जरिया नहीं है तो 50% डिस्काउंट तो बनता है. अगर कंपनी ऐसी है जिसमें एग्जिट का जरिया है, जैसे कि रिवर्स मर्जर होगा या उसमें जो स्टेक है उसको होल्डिंग कंपनी में आके शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब मेरे हिसाब से 15-20% का डिस्काउंट लाजमी है. बट टीवीएस सर, आई एम स्पेसिफिकली नॉट अवेयर कि क्या सीन है, बट आई कैन चेक एंड गेट बैक टू यू सेपरेटली ऑन दिस. Mrs. Sneha P, if you would want to go ahead. हाँ अभिषेक जी, जी. दो क्वेश्चन है. एसजीएक्स निफ्टी का वॉल्यूम कैसे ग्रो कर रहा है और वो एनएससी को कैसे अफेक्ट कर रहा है उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे? आई मीन मतलब निफ्टी क्या वो दूसरा वाला गिफ्ट निफ्टी का. और अगर जब भी इसका आईपीओ आएगा एनएससी का, तो ये प्रिवेलिंग बीएससी पी से नीचे होगा या वो चांस नहीं है, ऊपर ही होगा? उस टाइम पे बीएससी पे जो पी पे चल रहा होगा उससे ऊपर ही आएगा? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सर आंसर करने के लिए. सर गिफ्ट निफ्टी, ऑब्वियसली द वॉल्यूम्स आर शिफ्टिंग. जब से एसजीएक्स बंद होगी गिफ्ट पे खुला है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. पहले हमारे ही एक्सचेंज का ट्रेडिंग दूसरे किसी एक्सचेंज पे हो रहा था एंड वी वर लूजिंग दैट रेवेन्यू. सो दैट हैड एटलीस्ट कम बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गिफ्ट निफ्टी. बट आई डोंट हैव दी वर्किंग कि आज के दिन कितना रेवेन्यू गिफ्ट सिटी वाले एक्सचेंज से आ रहा है. इट इज देयर इन द एनुअल रिपोर्ट, बट मेरे पास रेडी नंबर्स नहीं है. आई कैन चेक एंड अपडेट यू. On the second point, IPO price band is dependent on a lot of factors, and that price band can actually be lower than BSE for sure. मतलब वो काफी हद तक लॉजिकल है कि जो भी मार्केट में चल रहा है उससे नीचे प्राइस बैंड खुले जिससे कि IPO सब्सक्राइब हो, बिकॉज द IPO विल आल्सो बी लार्ज. अगर NSE 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 10% डाइल्यूट भी करता है तो 50,000 करोड़ का IPO आएगा. अब समझो स्विगी का IPO 10,000 करोड़ का है, एनएससी का आईपीओ अगर 2 साल बाद आता है तो 50,000 करोड़ का आईपीओ आएगा, which might be one of the largest IPOs the Indian market has ever seen. So price band they will have to keep attractive so that they are able to fill the IPO. But yes, post listing I think the real value discovery should happen. And उसके बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस बिटवीन बीएसई एंड एनएससी नहीं रहना चाहिए. नहीं मतलब मेरे बोलने का मतलब है एनएससी बीइंग द नंबर 1 एक्सचेंज और बीएससी से नीचे पी में लाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना सर? वो इसलिए आ सकता है बिकॉज इट इज नंबर 1, उसके लिए ग्रोथ का जगह थोड़ा कम है. बीएससी इफ इट इज एबल टू कैप्चर मार्केट शेयर तो इट कैन ग्रो मच फास्टर. इसीलिए देयर इज अ चांस दैट द पी माइट बी अ लिटिल लोअर देन बीएससी, बट रिमेन्स टू बी सीन. सर 1 साल और रहेगा तब थोड़ा और आइडिया लगेगा. बट just to answer the question, can it come lower? Yes, it can come lower. 2 reasons. One, IPO will be very large, तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए typically bankers might price it a little attractively. Second, because BSE is much smaller, it has much more room to grow. NSE is already very large, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा grow करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. But they have been able to grow fairly well. So I mean, yes. Okay. अभिषेक जी, मेरा क्वेश्चन रह गया कि एनएससी एंड बीएससी की इंसेंट्रिक वैल्यू, स्पेशली एनएससी की आज की तारीख में क्या होनी चाहिए? सर इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे डिफाइन करते हो? बिकॉज इसमें तो कोई ऐसे अदर होल्डिंग्स तो है नहीं जी. तो इसमें तो जो रेवेन्यू बुक्स में आ रही है वही रेवेन्यू है, तो आपको तो पी मल्टीपल पे ही देखना पड़ेगा. जी 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 जी. पी मल्टीपल तो सर हमने अभी प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया. फॉरवर्ड पी लगभग आई थिंक 40 और 65 का आ रहा है. करंट पी लगभग 60 और 85 का आ रहा है. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट. थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम. Mr. Vishwanath, if you would want to go ahead. Mr. Vishwanath Pishi. Yeah. Hi, Abhishek. I have one question. Like Polymer Tech, there is a plan to come for IPO in April. Then they said in November. Do we know what is the reason for the No delay? updates sir from the company. I think IPO तो थोड़ा अभी it is far away only. मेरी जो understanding है, बाकी I don't have any official communication from the company. अभी there was a very negative event in the company क्योंकि इनके auditor ने resign कर दिया. ऑडिटर रेजिग्नेशन मैं पर्सनली थोड़ा सीरियस इवेंट मानता हूँ बिकॉज अननेसेसरी कोई ऑडिटर रिजाइन करता नहीं है. बट नंबर्स आर गुड. अभी उनका एनुअल रिपोर्ट भी आया था, 23-24 की डेटा भी आई है. नंबर्स तो काफी अच्छे आए हैं. प्योर नंबर्स, इट इज लुकिंग वेरी गुड. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉन नेगोशिएबल, तो वो आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा.
बट आईपीओ पे कंपनी का कोई कम्युनिकेशन एज ऑफ नाउ नहीं है मेरे पास. Second quick question: when you invest in the unlisted stock, how do you know that which will get listed in the future? Because liquidity is an issue. So सर how do we take? न्यूज़ फॉलो करना पड़ता है, मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है, तभी पता चलता है सर. और तो कोई तरीका नहीं है. So the people who give the platform, they will not have any information, like they don't collect or anything, because it's just to liquidate the stock, or We try, no, like the idea of having these webinars is to kind of give out information which we have collected, which we have researched. We get you mailers, we get you regular updates on our community. If you're not on the community, I can share the link with you. You can join that. That will help you kind of work out. Please share the link. Thanks. I'll do that. Rochak, if you can put the community link on the group. Bishwajit ji, if you could kindly go ahead. हेलो, may I audible? Yeah. आर पावर के लिए हम लोग का क्या इन्वेस्टर का क्या होना चाहिए अभी? आर पावर कौन सी कंपनी है सर? रिलायंस पावर जो सर, रिलायंस पावर में आई एम नॉट इन्वेस्टेड. आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च. कांट कमेंट. ओके. Mr. Ravinder, if you want to go ahead. Yeah, actually, I was traveling, so missed a lot. I just want to know your closest suggestion for Elcid, the stock which you have unlisted, which is closest to Elcid. I mean, that story could be repeated in that stock. Achha, okay. So closest to Elcid, so Commercial Bharat Nidhi is very close. Dalmia is very close. Dalmia Refractories is close. Endofil for that matter is similar क्योंकि 50% टाइप का डिस्काउंट है. उसके अलावा तो बाकी तो सर थोड़े से डिफरेंट नेचर के होल्डिंग कंपनीज हैं, या फिर जहाँ पर रिवर्स मर्जर हो सकता है वो थोड़ा अलग मैच पे चलता है. बट या these 4-5 companies I think can be similarly placed. Hello, Mr. Abhishek. Good evening. Jay Kumar here. Sir, how are you? I am fine, sir. How are you? Nice to have your seminar. It's very depth, very informative. I would like to ask a few questions. Yeah. Now that Elcid investment, has moved up. Now, average price of mine brought to your own respected further was at around 1,25,000. Correct. I hold around 10 shares. Now, its current value is 3.4 lakhs. Correct. Do you suggest me to hold on? और typically, like I said, मेरा benchmark बहुत simple होता है holding companies में. Intrinsic value का 50% is what the typical discount is. अब वो 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, but typically as a benchmark thumb rule में 50% लेके चलता हूँ. 50 के आसपास आने से लगता है fair market value आ गया है, तो liquidation का plan कर सकते हैं. कर सकते हैं. हाँ. Okay. And the other companies that you have suggested now? Hello. Hello. Hello, Mr. Abhishek. Yeah. Now the other companies that you have suggested, like Kamak Commercials, Finopatak, Vivrithi Capital, from among this, which you think are the best from your perspective? Sir, they are all different natures of companies. Kamak Commercial is very similar to Elcid. उसमें बहुत डिस्काउंट है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन अनलॉकिंग का कोई जरिया नहीं है, नहीं पता कब होगा. टाइम्स ग्रुप ने आज तक कोई कंपनी लिस्ट नहीं कराई है. फिनोपेटेक में तो वैल्यू अनलॉकिंग काफी हद तक हो गई है. 110 रुपए का शेयर अभी 170 रुपए पे चल रहा है 4 महीने में. विवृति इज अ ऑपरेशनल कंपनी. उसमें IPO इज फेयरली सर्टेन. इट इज बैक्ड बाय लार्जेस्ट ऑफ द PEs इन द ग्लोब. सो देयर आई डोंट थिंक इट इज अ वैल्यू प्ले, इट इज अ ग्रोथ प्ले. But I think overall what we stress is if people want to park in a basket, then the Diwali basket which we had created and which we had kind of built out with a mix of Indofil spray and Vivrithi is a good place to kind of start building a long-term portfolio for 3-4 years. Got it. Spray Engineering is not a holding company, right? No. Spray is an operational company, sir. It is a manufacturing. And this Bharat Nidhi is a good company. Bharat Nidhi is a holding company. Again, BCCL की stake है उसमें बस. That's the only value. And Indofil also holds shares in some other. But Indofil is operational also. Indofil में 3,000 crore का sale और 300 crore का PAT. If you say it together in a nutshell, Indofil is a win-win. Okay. Thanks a lot. Thank you, sir.
Very nice presentation. Thank you, sir. Thank you so much. Mr. Praveen Agarwal, if you want to kindly go ahead. Hello. Yes, so what is your view on CSK? CSK, sir, does done well. अभी तो I think 140, 150 का around 190, 200 पे है. Broadly, calculation simple है. 200-250 करोड़ का पैट है, करीबन 5-6 हजार करोड़ का मार्केट कैप है. Compared to the new teams which have been sold, it is still at a slight discount only. Value unlocking is not very clear कब तक होगी, क्योंकि IPO का कोई clear cut timeline नहीं है. Company should excuse me, company should predictably give 200 to 300 crore का पैट for the next 3-4 years, क्योंकि broadcasting revenue fixed है. And greatest bit of CSK is कि इसमें number of entities are limited. अभी IPL में 10 टीम है, वो 10 ही रहेंगे. 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 100 नहीं हो पाएगा. So therefore वो जो वैल्यू क्रिएशन लीग का होगा, वो लीग इंडिया में अभी भी बहुत स्मॉल स्टेजेस में है. अभी भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप, merchandising revenue बहुत छोटी है. If that grows, if they are able to do well on that front, then it can be a very different game from what it is right now. Because globally sporting companies बहुत बड़ी होती है. मतलब if you look at Manchester United, NFL की teams, NBA की teams, they are valued much higher. They are like 2, 3, 4, $5 billion companies. Mr. Abhishek, one question on SK Finance. What do you think, are the is the potential of this company, and since it is backed by many premium private equity investors, do you think current price levels are good to enter? So I think broadly SK Finance is a NBFC. अभी NBFC में valuation तो current is similar to what they had raised the previous round at, and जो उनका previous 3.5-4 time book चल रहा था उसी पे चल रहा है. But if you look at listed space, like I covered in the presentation also, listed space में थोड़ा NBFC पे pressure है. So it will remain to be seen कि वो अभी IPO करते हैं कि थोड़ा रुक के करते हैं. But other than that, business तो ठीक ठाक है. They are doing a good 65% market share in second hand four-wheeler financing business. And do you have a view between, if one has to choose between Vivriti and SK Finance, would you have a view between these two? So both are actually similar opportunities, to be honest. मतलब दोनों में price to book भी similar है, दोनों का growth भी similar है. अगर आपको जल्दी liquidity चाहिए तो SK Finance का IPO जल्दी आएगा. विवृति का IPO मेरे हिसाब से 2 साल से 3 साल दूर है. अभी immediately तो नहीं आने वाला है. Vivriti has a more granular loan book. It has a group. उसमें 2 subsidiary companies भी हैं. एक विवृति AMC है और एक UB करके debt syndication platform है, which is funded by Sequoia, Tiger Global, B Capital, Dragoneer Investments. So that can be a wider play on the credit market, but apart from that, I think broadly similar है. The valuation wise at par है. So you can maybe decide on liquidity as a benchmark to kind of invest. Thank you so much. Hello. Mr. Sir, Jinesh, if you would want to go ahead. Hello. Yeah. What's about Indian Potash? Sir, Indian Potash, again, we had covered last time. I will get a link shared with you. उसमें आपको coverage मिल जाएगी. Shine, if you can share the link for Indian Potash with Mr. Zaveri. Okay. Mr. Neeraj, if you want to. Yeah, can you unmute? Am I audible? Yeah. Yeah, NSE shares, when will it be available on a T+1 basis? Meaning right now we have in principle approval. We don't know. We don't know. Exchange के ऊपर है sir. Acha. Maybe a few months before the IPO or something like that? Or... Possible है, हाँ, possible है, हो जाना चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत document requirement है. Hopefully it should come down. It should be easier going forward.
When do you say this IPO of NSE, Mr. Abhishek? सर 12 से 18 महीना 12 से 24 महीना रादर उसके अंदर अंदर तो आना Why चाहिए is the price so volatile? Somebody is selling at 1600, somebody is selling at Sir, 1800. because bonus happened recently, and because after the bonus there was less availability in the market, so therefore there was a slight mismatch between demand and supply, and hence there was What is the current right price of it? And is it worth buying at this level? so that I think you'll have to take a call basis the valuation like we discussed. Leading pay 40 है and BSE is at 65, then you have to just see कि versus BSE आपको कैसा लगता है, because यहाँ तो simple है ना working करना, because आपके पास direct competitor है, listed है तो आपके There are two ways of looking at now. One is it will get listed in BSE, so the re-rating of BSE will automatically happen. correct. The second thing, NSE is available at a very cheaper PE, and if the moment it starts getting availability at say T+1 or T+7, Correct. as the price will go more or price will come down. Right now, because of this ISN lock-in or 15 So 3 months, generally liquidity increase होने से the stock price does better only, because आज के दिन जो एक बहुत बड़ा pool of investors is not able to buy into it, they become eligible to kind of invest, so that helps. so right now you still feel the valuations are attractive. Sir, that is something which we'll have to evaluate individually, because But still, in your opinion, and your opinion matters from individual to individual. sir, I feel if it is a long-term bet, then definitely yes, because abhi bhi there is a lot of things which Indian exchanges don't do. How I look at it is, आज के दिन भी इंडिया में exchange पे सिर्फ stock बिकता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा सेगमेंट बड़ा नहीं है. आगे चल के रियल एस्टेट आएगा, गोल्ड आएगा, there are so many assets which will get digitized. AIF आएगा, things can be liquidated on the exchange. REITs will become much larger, InvITs will become much larger, SM REIT the segment is forming, debt market will become much larger. अभी तो debt market इंडिया में exist ही नहीं करता है, कुछ भी नहीं है global markets के हिसाब से. So slowly and steadily, if you look at the macro picture, I think exchanges will keep on growing yes, for the next 5-7 years. So I'm more of a macro player, so I look at it that way. So how Yeah, about Abhishek, just one more question. Is there any other stock with a dividend yield greater than 5% other than HDFC Securities? सर ये ना आप एक बार हमारे वेबसाइट पे जाके स्क्रीनर में डिविडेंड यील्ड डालोगे ना तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी. Okay. अगर आपको हेल्प लगेगा ना तो यू कैन जस्ट maybe share your number and Shine or someone from my team will give you a call. Okay, cool. in this run up to this? See, even the CDSL is a better stock, no? CDSL, Nsdl. Correct. Thanks. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Mr. Mistry, please go ahead. Sir, your view on is CDSL. It is viable at current rate? Sir, honestly, I think there are a lot of research reports up. I do not personally have a very good understanding on CDSL, but broadly numbers are looking good. So it is actually the role of an NS in a largest depository. Correct. And it is worth holding because the depository will only increase. Correct. No, I think oligopoly is मतलब दो ही player हैं जितने भी और companies दो ही होना है, so I think that way it becomes positive. And it is doing better than NSDL. Correct. Thank you. Sir, because there are a lot of questions, I will keep the call open for another 5 minutes. But people who have kind of heard us or would want to drop off can actually drop off. But because there are questions, we want to keep it open for 5 minutes. But I mean, we have covered all that we wanted to cover. So, people who are done can kind of drop off. We'll just want to try and cover 3-4 more questions. So, Mr. Jayaprakash, if you would want to go ahead quickly. Hi Abhishek. So what's your view on Bira 9? So I think pre-COVID it was 1,000, now fallen to 550. So what's your view on Bira 9? So Bira, I think they raised a round from Tiger Pacific Capital at around 625, and that was around 200 crore round. And uske pehle Cream Holdings se bhi they had raised a similar valuation. So institutional investors are still valuing it at
a price higher than what is available in the unlisted market. So I think unlisted में करीबन 550, 600, 560, 70 का भाव चलता है. So that's at about a 15-20% discount to the institutional round, which had happened also one and a half years back. Only risk here is they have not been able to get profitable. Abhi bhi they are burning cash. Growth in sales also, from what I recall, is not very good. They have grown but not very well. तो IPO मुझे लगता है आ जाना चाहिए, 2 साल का टाइमलाइन लेके लोगों को चलना चाहिए. बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हूँ बट बहुत नेगेटिव भी नहीं हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल जब आता है बड़ा तो वो लोग काफी कुछ सोच के ही लाते हैं. So that's the overall thing from my side. Is it a time to invest in rooms? I think it's not profitable, and then first 2 quarters. Factual analysis, 2.4 billion पे लास्ट इन्होंने रेज किया था, अभी 5 बिलियन पे है. उसके पहले जो बड़ा राउंड हुआ था 10 बिलियन पे हुआ था. नंबर्स वाइज अगर 5 बिलियन पकड़े तो करीबन 40,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है. इस साल करीबन 1000 करोड़ का पैट आना चाहिए. तो आप आज के दिन 40x पे ले रहे हो. बाकी हॉस्पिटैलिटी लगभग 40 से 55 के बीच में चलता है. प्लेटफॉर्म प्ले अगर देखोगे तो 70 से 80 के बीच में चलता है. एक्विजिशन इन्होंने बड़ा किया है मोटेल 6 का, सो that will also dictate how the future plays out for them. So that's the overall groundwork for it. Okay, thanks. Hi, Abhishek. Thanks, Abhishek. What is the view on Polymatic Electronics? The turnover is the share price is currently falling. I mean, we just covered Polymatic 2-3 times. Rochak, if you can just put the response back on the chat. Anshulji, we'll put the response on the chat again. Hi. Yeah, please, Mr. Kumar Ladia and Associates. Sir, I can't hear you. Up muted. If you would want to unmute. Yeah, sorry. Am I audible now? Yeah. For a long-term investor, what is the appropriate time to invest in unlisted before IPO? Say 3 years before, 4 years, or a tentative timeline? And your views on just one stock, Apollo Green Energy. Okay. So, sir, on timelines, I think it depends on when you find value. So there have been times when we have passed on an investment because value sahi nahi laga, and we entered closer to the IPO because usme value sahi laga. Like for example, I'll give you an example of Exigo. Exigo IPO से 5-6 साल पहले आया था 120, 25, 30 रुपए पे. तो उस समय we were not very positive on it क्योंकि महंगा लग रहा था उस समय जो भी मार्केट कैप चल रहा था. फिर हमने देखा कि 1.5-2 साल बाद वो 70-80 रुपए के भाव पे आ गया. अब उस समय वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगने लग गई. तो टाइम पीरियड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन. टाइम पीरियड में जनरली early entry gives you a better probability of making a higher exit. Closer to the IPO, obviously it becomes more public, it becomes more well understood in the market. तो typically जो discount to the fair market value रहता है वो गिर जाता है, तो आपके पास buffer कम हो जाता है. So both these factors you have to kind of balance and play it out. And your views on Apollo Green? Yeah, Apollo Green sir, positive ये है कि they are getting I think a good order book. अभी उनका एक नया न्यूज आया था कि 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक बना रहे हैं. लगभग उन्होंने 3,500 करोड़ का शायद ऑर्डर बुक प्लान किया एग्जीक्यूट करने का. नेगेटिव इतना ही है कि पहले इनका नाम था अपोलो इंटरनेशनल एंड दे वर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस. तो कुछ ट्रेडिंग और लेदर और एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करते थे. तो आज के दिन भी कुछ रेवेन्यू का पोर्शन उसके थ्रू आता है जो उन्होंने पूरा अभी तक निकाल के अलग नहीं किया है. तो नंबर पे पूरा कंफर्ट लेना मुश्किल है मेरे लिए. If what the company is claiming, if that is right, then तो valuation logically है 20-25 पे अगर आपको EPC business मिल रहा है तो it is not a very bad deal. It's not cheap also, but a decent room to make money hopefully. But इसमें red flag वही है कि अभी कितना portion बाकी businesses का है वो बहुत clear नहीं है. Trading से कितना आ रहा है, वो export से कितना आ रहा है. Pure play EPC का इतना revenue रहता तो we would have been very happy. Mr. Sir, I'll take your question on call. I think जो lineup में है वो पहले close कर लेता हूँ. So I think we have just 2 more people who we have not covered. Mr. Prem KS, if you can go ahead.
I don't think he's there. So, Mr. Sandeep Jain, if you would want to quickly go ahead. Yeah, good afternoon. Just Yeah. wanted to ask future of Mohan Mekin because it is an alcohol segment and this segment is growing very fast. Correct. So kindly let me know your views of Mohan Mekin. Okay, so Mohan, we can also fairly. So I'll show you, sir, how do we think on companies. I think on the platform it is actually fairly simple to evaluate the entities. So जैसे कि मोहन मेकिन अगर आपको देखना हो तो you can just come on the platform, look at मोहन मेकिन, see कि पुराना प्राइसिंग क्या चल रहा था. जैसे this started at around 1421, उसके बाद ये 1400 रुपया हुआ, फिर 1800 रुपया हुआ, फिर 2000 रुपया हुआ, अभी लगभग 2600 रुपये पे ट्रेड हो रहा है. 23-24 के नंबर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे. इन्होंने लगभग 86 करोड़ का पैक दिया है. लगभग अल्कोबेव में 2000 करोड़ का मार्केट, इनको 2000 करोड़ का मार्केट कैप मिला है. एंड इस पी पे इस पैक पे इनका पी बैठता है 25 के आसपास का. इंडस्ट्री पी लगभग 70 का चलता है. इसमें आप बाकी कंपनीज चेक कर सकते हो. डियाजियो कितने पे चल रहा है, किंगफिशर कितने पे चल रहा है, यूनाइटेड ब्रूवरीज कितने पे चल रहा है. दैट विल गिव यू एन आइडिया. वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है इट इज क्वाइट चीप. वैल्यू अनलॉकिंग विल आल्सो डिपेंड अपॉन IPO, बट व्हाट वी हैव सीन हिस्टोरिकली इज कि इसका रेवेन्यू भी 20-25% ग्रो करता है एंड हर साल ये 15-20-25% ग्रो कर लेता है. तो 2021 में 1400 का स्टॉक आज के दिन 2600 पे है. तो 2 साल में लगभग 70-80% ग्रोथ है. तो 30-40% का ग्रोथ आ रहा है शेयर प्राइस में. Yes, it is already listed on CSE. I have seen. So can it not list on NSE or BSE? वो तो कंपनी को करना पड़ेगा ना सर. Yeah. Okay. Thank you. Cool. Perfect. I think we will have to take a pause here. I mean, there are still some questions which I know are unanswered, but I mean, it's 4:30 and we started at 3 p.m. So 1.5 hours is a very good long time which we have spent together. Please reach out to our teams for any further clarifications. You can text me. My details are available. We'll put it on the chat also. And we'll keep on doing these webinars. So if I could not cover any bit, then would love to kind of cover it in the next one. If you have any feedback on what we want us to cover next, you can just tweet it on our Twitter handle or put it as a suggestion to any one of our team members, and we'll try and cover that as a part of the next webinar. So thank you everyone for joining in. It was a pleasure speaking to all of you. We'll also upload this webinar onto the YouTube channel. So if you would want access and want to look at it later, it will be available for your records. Right? Thank you. Have a good day. Take care. We'll be ending the webinar now.